Hello everyone, welcome to Mains Strategy session of Next IAS. In this session today, we are going to discuss about GS paper 4 ethics and governance part of GS paper 2. So today we have with us our senior Next IAS faculty members to discuss on this aspect. सर पति सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि सर जो ये पेपर है इसके कितने पार्ट होते हैं एंड इफ समवन वांट्स टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ दिस पेपर हाउ यू शुड गो अबाउट इट. See, first of all, the paper is an easy paper. People have made it too tough. Actually, it's a very easy paper. And the best way to prepare for this paper is like when you see the syllabus, it looks very disparate. It looks very unorganized. On one side, what you see is ethics. On the other side, you see emotional intelligence. On the other side, you see human values. You also see thinkers, philosophers. It's like it's quite disorganized. But a smart person, what they'll do is they'll first organize the syllabus. Because if you look at the syllabus in depth, you can see the cross connections to the syllabus. If you can organize the syllabus accordingly, your preparation becomes very easy. If I were in your place, if I had to prepare for this paper in 60 days, that's how I'll go about it. What I'll do is I'll start with the first part. I'll take up ethics. Now, when I say ethics, the first thing I look at is the essence of ethics. What does ethics mean? How is it connected to law? How is it connected to religion? That's the first thing I look at it. Second thing I look at is like, I'll get to the second part, that is, which talks about what determines your ethics in a given situation. That's the second topic in the syllabus. When I'm doing this part of the syllabus, what I'll do is I'll try to connect the theory to the thinker. For example, when I'm studying virtue ethics, I'll prepare Socrates along with it. When I'm studying virtue ethics, I'll prepare Aristotle along with it. When I'm studying duty ethics, I'll not only prepare Kant, I'll also prepare John Rawls along with it. So what I'm trying to tell you here is like when you're doing the topics when you're doing the themes, connected to a thinker, your job becomes much more easy. So that's the first way to do about it. Second, after ethics, let's come down to values. There are three sets of values that UPSC talks about. One is human values. Second, it talks about is foundational values for civil services. Third, it talks about public service values. And this is a value section. It completely deals with values. For example, when you're doing human values, look into all the basic values like, say, kindness or forgiveness. And if you see previous year's questions, you had quotations from this section. And that gives me I'll have a tip for all of you. When you're doing this values part, focus on these values and moral thinkers. Because all these moral thinkers have spoken about. Like last year, there was a question on kindness. It's a basic human value. So when you're preparing your paper, you organize it like this. Ethics first, then the three sets of values. Then after values, come down to emotional intelligence. Then after emotional intelligence, you come down to attitude. So this is how you go about it. And lastly, if you see the last two sections, which talks about, say, public service values and ethics in public administration and probity part, that's purely connected to administration. So you take that chunk separately. So if you organize the syllabus like this, it becomes very easy. And when you're organizing the whole syllabus like this, remember there's something called applied ethics areas also. The two areas which are very applied. One is international relations and other is corporate governance. You treat them separately. And when you're doing corporate governance, even you can look at the case studies also, because there are some case studies which come from corporate governance areas also. So this is how I'll organize it. I will not get to in-depth of it. I'll try to club things together. For example, as I said, when I'm doing ethics, I'll club it with philosophers. When I'm doing human values, I'll club it with moral thinkers. That's how I'll proceed. So I'm taking all the syllabus in one go, making the connections, and I'll connect all the dots and prepare accordingly. That will be my way of going about it. Okay, sir. Sir, if you see the paper pattern of GS paper 1, 2 and 3, so it's kind of fixed that you have 10 questions of 10 marker and 10 questions of 15 marker. But when we see ethics paper, it has different pattern than other three papers. So what is the current pattern of this paper, and is it going to be static or is it going to change? When you say patterns, there's one pattern which is like very static. That is, they have in section A, there are 13 questions. 3 are quotes, 10 are questions. Very simple. What they vary sometimes is the kind of questions they have. For example, the word limit of the question. Sometimes they've had questions with a word limit for 150 words. Sometimes they even had questions with 50 words. Short note questions are also there. They'll vary with the word limit, but otherwise more or less the pattern remains the same. You'll have 3 quotes, 10 questions and 6 case studies. That's how it's going to be. But the word limits will matter. Like I can remember a couple of years back, they even had a word limit for 30 words.
And writing 30-word answers require a lot of skill because that requires precision. And most kids lose marks in these short questions. It looks easy, but it's difficult. Why? Because you have to concise everything in 30 words or 50 words. Trust me, it's difficult. So pattern is almost the same. It's quite starting that way. Yes, if I remember, sir, before 2010, there were questions. GS paper was used to have 300 marks for paper 1, 300 marks for paper 2. And there were certain questions which were of 20 words, 50 words, 30 words. So different kind of approach was needed to tackle those questions. And in this ethics paper also, I think the same kind of approach is needed. And usually the tip I have is when you're doing these 50 and 30-word questions come usually from values and virtues. Remember that. Oh, by the way, quotes also. One of the easiest way to prepare for quotes is when you're preparing values, quotes. Because they'll not ask you to define kindness. They'll give you a quote of a moral thinker. So that's how you connect things. Okay. Sir, my second question from Asif sir is with you. What should be the general approach for answer writing and how you can use PYQ for your ethics preparation? So I'll break this into two parts. I think one is with respect to the number of papers that a student should solve in the next 2 months. We have 64 days. And how to use PYQs in the process of writing answers. First, with respect to writing full papers, I think I would suggest 3 full papers and 1 simulator along with GS 1, 2, 3, 4. Which should be ideally done somewhere between end of August and early September. The simulators to experience the UPSC situation, because ethics is the last paper that they write on the 3rd day, and that is very difficult for them, right? And with respect to PYQs, the idea is to understand where has UPSC asking the questions from, what are the areas from which they are repeating the questions from, and how lengthy the paper has become over the years. And I think if you look at the length of the case study especially, it is taking more and more time for people to read and analyze and then write. So PYQs help you understand the pattern and the areas to emphasize on. So both PYQs and full-length tests should be used for answer writing. Prince sir, I would like, because some of the student has said that you have told them certain other aspects of answer writing as well. So would you like to add something what Asif sir has? Yes. So आंसर राइटिंग के अंदर जो अप्रोच जो स्टूडेंट्स को बताई जाती है, जो स्ट्रैटेजी बताई जाती है, उसमें हम IVC मॉडल को ही यूज़ करते हैं और वो एथिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, केस स्टडी में नहीं, लेकिन जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें हम इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में ही जाते हैं. अब इसमें अगर आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए यू हैव टू टाइम योर आंसर्स, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक 60% रूल जो है उसको फॉलो कर सकते हैं. इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. फॉर एग्जांपल हमें पता है कि पहले 13 क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 मार्क्स के हमारे पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे 60% और 10 आपको देखना है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा. सिमिलरली जब हम केस स्टडी की बात करते हैं, केस स्टडीज हमारी 20 मार्कर्स की रहती हैं, तो वहाँ पर आपको 12 मिनट के अंदर, क्योंकि 60% उसका 12 मिनट बनेगा, तो 12 मिनट में उसे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा. सो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन को यूज़ करके और ये 60% का रूल फॉलो करते हुए, तो आप अपने पेपर को कंप्लीट भी कर लेंगे टाइमली, और क्योंकि आप IBC मॉडल को फॉलो करें तो एक आपकी अप्रोच और स्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा. With respect to paper completion, something that I notice is that ethics case studies has a word limit of 250, but unlike in GS 1, 2, 3 where they give 3 sides to write, in case study they give 4 sides most of the time. So students end up stretching themselves and spending more time trying to fill the space, and that becomes a trap, and they end up giving more than the required time for case studies, and then they compromise part A. And if an evaluator is taking from the beginning, they are going through a lot of average part A questions before they come to part B. So this has been a very tricky space for students with respect to paper completion. In fact, मैं यही बोलना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनका ये इटर्नल क्वेश्चन है कि पहले क्या अटेम्प्ट करें, शुड वी गो फॉर केस स्टडीज फर्स्ट एंड देन थियोरेटिकल क्वेश्चंस, और थियोरेटिकल फर्स्ट एंड देन केस स्टडी क्वेश्चन. सर आपका टेक क्या है इस पर? मुझे लगता है काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक है, ये आपको देखना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है. तो अगर किसी को लगता है कि केस स्टडीज़ जो है उसके लिए वो लो हैंगिंग फ्रूट है, तो केस स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं. CSET के अंदर भी हम यही चीज़ बताते हैं कि इंग्लिश पहले करना चाहिए, मैथ्स पहले करना चाहिए. तो आपको देखना कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, तो आप पहले उसी को अटेम्प्ट करिए. Sir, I'll add something. I'll ask them to use the test series as a means to experiment, right? In one test they try different. It depends a lot
on the paper also. Right. Suppose if you see the questions, Hmm. section A, if you think that, okay, these are areas which I'm Right. comfortable with, you can start off with that. Start It's not off with necessary that you will start with case studies. It all depends. You have to learn to play by ear. I mean, Right. उसका On क्या the हो foot रहा है? thinking. राइट एंड एज ही सेड कि आपको टेस्ट में एक्सपेरिमेंटेशन करना हाँ, पड़ेगा एंड right. यू हैव टू कम ऑन द पॉइंट कि आपके लिए व्हाट वर्क्स What is your strong area? That's the purpose of test series. Right. I mean, that's what we are doing, and like Right. I have this enhancer course going on. That's what we do every week. I have a sectional test. And you have 3 full tests also. Yes, in 3 this. full tests also. So Right. that's how we experiment. I mean, these were the students can experiment, which is my forte, like Right. doing a case study first or the section A first. So you have to experiment during these times only. ओके सर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको अप्रोच कैसे करना चाहिए? ओके तो उसके लिए पहले एक स्ट्रक्चर जो हमारा रहता है जिसपे हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, जिसमें 2 लाइन की इंट्रोडक्शन लिखते हैं। देन उसमें हम स्टेक होल्डर्स जो है उसे पिक करते हैं। फिर इसके स्टेक होल्डर से नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है जो डायलेमा है पूरी केस स्टडी के अंदर कि कन्फ्यूजन क्या है किसी भी से, अगर आपको एक सिविल साउंड बनाया गया उसके अंदर। एंड देन वेरियस ऑप्शंस ईदर आर अवेलेबल इन द क्वेश्चन पर से, और समटाइम्स यू हैव टू क्रिएट दिस ऑप्शंस फ्रॉम योर साइड। तो वहाँ पर मान लीजिए कि आजकल जो केस स्टडीज आ रही है उसमें ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए नहीं होते हैं, दे आस्क यू टू कम अप विद द ऑप्शंस। तो फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट ऑप्शंस पे जाना होता है एंड फाइनली यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर पार्ट। अब केस स्टडीज के साथ एक यूनिक चीज़ क्या होती है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसको तो आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं, लेकिन केस स्टडीज के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब आपको वो एक्सपीरियंस आपने नहीं किया, आपको केस स्टडी में उन्होंने डीएम बना दिया, आपको एक ऐसी सिचुएशन दे दी जो आपने कभी फेस नहीं करी है, तो वो थॉट लेवल एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर करना पड़ता है। और वो कैसे आएगा? जितनी ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ आप प्रैक्टिस करते हैं तो मतलब आप उन केस स्टडीज़ में अपने आप को पहले से रख चुके हैं, और जब आप उस पूरी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं थॉट लेवल के ऊपर, तब आप एक अच्छा आंसर उसके बेसिस पे लिख सकते हैं। लेकिन एक जो आप कह सकते हैं इसके पीछे क्या चीज़ होनी चाहिए जब आप एक केस स्टडी का आंसर लिख रहे हैं, ऑन द बैक ऑफ योर माइंड क्या होना चाहिए? तो उसमें आप एथिक्स, एम्पैथी एंड प्रोबिटी, अगर ये 3 चीज़ें ध्यान में रखकर अगर आप आंसर करते हैं तो आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, जिसको आप जो भी इवैल्यूएटर है वो उसके लिए अच्छे मार्क्स देगा ही देगा, वो आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। तो एथिक्स, एम्पैथी एंड प्रोबिटी, ये 3 चीज़ें आपके आंसर में दिखनी चाहिए। And dear friends, one of the important area of paper 2 is governance as well. So, coming to governance part, sir, मंजुल सर, आप जो syllabus है governance का, can we define this syllabus? Yes, in paper 2, UPSC ने बड़े प्यार से नहीं होता है कि they have defined the syllabus of governance, what governance is, then e-governance. So clearly they have mentioned all these terms. Governance they have mentioned clearly, e-governance they have mentioned clearly. Now when we talk about pillars of governance, so there are 8 basic pillars of governance. But out of those pillars, 2 pillars are very important, transparency and accountability. So UPSC has mentioned separately transparency and accountability. Then the tools to ensure transparency and accountability. तो जहाँ पे हम bodies cover करते हैं, where we cover different kind of institutions, जैसे आपका लोकपाल हो गया, CBI है which has been always in news, then RTI बड़ा important है, we have got earlier questions also from the topic. तो ये transparency and accountability they have mentioned completely separately, as well as role of civil services in a democracy. अब role of civil services in a democracy just they have mentioned this much. अब यहाँ पे आपको है कि background of civil services, then present status, then lateral entry scheme, what are the challenges associated with civil services, each and everything you have to cover on your own. ये है। देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे नेक्स्ट पार्ट में आता है आपको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे, तो दे हैव मेंशनड इट सेपरेटली। देन वी कम टू द वेलफेयर स्कीम्स एंड द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एंड देन वेलफेयर स्कीम्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो यहाँ पे यूपीएससी ने मेंशन किया एंड वन मस्ट प्रिपेयर for each and every topic separately. And in last, if we go by the last 5 years also, the last 5 years we find that there have been questions from these topics at a regular interval. Sir, ऐसा बोलते हैं कि state is everywhere. And जो because obviously governance is done by state only, तो जो पेपर का पैटर्न है, जो अपने यूपीएससी का पूरा एग्जाम है, गवर्नेंस इज वो दो इट हैज बीन मेंशन्ड इन पेपर 2, लेकिन वो सारे ही पार्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता है, जैसे आपके सिलेबस होता है, एथिक्स में भी सब जगह सर्वे आप ही इनफैक्ट governance पेपर 1 में भी है, पेपर 3 सर, एवरीवेयर यू हैव टू यूज सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस. कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस एज वेल? यस, देखिए whenever we talk about governance, तो गवर्नेंस में आप सबसे ज्यादा किस पे फोकस करते हो? यू आर फोकस ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन.
एंड वेन एवर यू आर स्टडिंग, जैसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सबसे ज्यादा रोल किसका है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी सबसे ज्यादा रोल कहां पे है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में जैसे मैंने टूल्स की बात की थी, तो टूल्स में यू टॉक अबाउट इफेक्टिवनेस, यू टॉक अबाउट एफिशिएंसी, यू टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी। तो अंटिल और अनलेस देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन द एंटायर सिस्टम, तो आपको कभी भी आप इंश्योर कर ही नहीं सकते कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आपके जितने भी ऑफिसर्स हैं, या फिर एथिक्स में सर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे भी एथिक्स में भी सर आपने देखा होगा कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो आपको इंश्योर करना पड़ता है। अंटिल और अनलेस यू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, हाउ कैन यू क्वेश्चन दी पब्लिक ऑफिसर? जैसे आज के समय में भी आप क्या होता है कि जितने भी इश्यूज होते हैं, तो पोस्ट द इश्यू, जैसे अब गवर्नमेंट ने फोकस किया आपको किस पे? कैपेसिटी बिल्डिंग पे। अर्लियर हमारा एक कॉन्सेप्शन बना हुआ था कि अकाउंटेबिलिटी का जनरल मतलब क्या होता है कि काम खराब होने पे किसके ऊपर ठिकरा फोड़ना है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जैसे अप्रोच चेंज कर दिया कि नहीं, हमें किस पे फोकस करना है? कैपेसिटी बिल्डिंग पे। जैसे मिशन कर्मयोगी है, ऑल दीज जितने भी स्कीम्स आ रहे हैं, गति शक्ति योजना या फिर जितने स्कीम्स आए, तो उनमें गवर्नमेंट इसी पे फोकस कर रही है कि अंटिल और अनलेस यू एंश्योर द कैपेसिटी, अंटिल और अनलेस यू एंश्योर दैट यस द सिस्टम इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क, देन ओनली यू कैन क्वेश्चन फॉर इनएफिशिएंसी, देन यू कैन ओनली क्वेश्चन फॉर फेलियर। तो इसलिए ये हर एक जगह गवर्नेंस, क्योंकि हर एक सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा एंटायर गवर्नमेंट यानी एंटायर कंट्री इज रन थ्रू दी एडमिनिस्ट्रेशन, अपना जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है। तो अपने ब्यूरोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ब्यूरोक्रेसी अपना सिस्टम वेयर मोस्ट ऑफ द पावर, मैक्सिमम पावर है किसके हाथ में? मैक्सिमम पावर इज इन द हैंड ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, दे हैव द डिसीजन मेकिंग पावर। तो इसलिए गवर्नेंस का रोल और इंपॉर्टेंट हो जाता है। And governance is one of the most dynamic subject Yes. as well. So how to connect governance and current affairs? सी गवर्नेंस एंड करंट अफेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन था, तो लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज अ न्यूज़ यानी कि गति शक्ति योजना। तो अब गति शक्ति योजना जैसे स्कीम पे था, तो अब गवर्नेंस में दे आस्क द क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू द कनेक्टिविटी, दैट हाउ गति शक्ति स्कीम विल एनहांस कनेक्टिविटी। तो ये आपको करंट अफेयर्स से कनेक्ट करना था। एंड देन डिफरेंट जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर ब्रिंगिंग अंडर वन। नहीं होता कि आपको अम्ब्रेला प्रोजेक्ट, जो आज के समय में आपका कॉन्सेप्ट चला, लास्ट ईयर जैसे दे आस्क द क्वेश्चन, आपको लास्ट ईयर ई गवर्नेंस क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस एज ए क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि आपको हमेशा बात होती है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया में नहीं होता कि आफ्टर 5 इयर्स में क्या ग्रोथ हुआ, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको क्वेश्चंस थे। देन लास्ट कपल ऑफ इयर्स स्पेशली आफ्टर नेशनल, अब यहाँ पे गवर्नेंस में एक चीज मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट करूंगा कि आपने यू कैन नॉट लुक ओनली एट द लास्ट 1 ईयर, आपको 2-3 ईयर्स से आपको रहना चाहिए। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने उसने फोकस किया था आपको वोकेशनल ट्रेनिंग पे, जब उसने फोकस किया वोकेशनल ट्रेनिंग पे, तो इमीडिएटली द क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड, बट यस कपल ऑफ इयर्स लेटर दे आस्क्ड द क्वेश्चन कि अर्न व्हाइल यू लर्न, तो उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो अप्रोच है अपना थोड़ा सा ब्रॉड रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी मोर काइंड ऑफ, नहीं होता है कि कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट्स ओवर द लास्ट 5 years 7 years आई कैन से, व्हिच हैज द इम्पैक्ट on it. Yes. In fact, sir, current affairs is such that कि वो हर सब्जेक्ट में, होल प्रोसेस ऑफ यूपीएससी में इट प्लेज इट्स रोल। सर प्रिंस सर, जो करंट अफेयर्स का यूज एथिक्स में कैसे हो सकता है? हाउ इट कैन बी यूज्ड? करंट अफेयर्स से आप एक तो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस है उसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज द एग्जांपल्स आल्सो। जैसे अभी आजकल फेक सर्टिफिकेट्स का काफ़ी चल रहा है, और अगर देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ें पूछी जा चुकी है जिसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि सिविल सर्विसेज में एथिक्स का इरोजन किस तरीके से हो रहा है। तो वहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ न्यूज़ में आती है तो क्वेश्चंस इस टाइप के बन सकते हैं, एंड मोर ओवर यू कैन यूज सच एग्जांपल्स आल्सो। तो इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब कोई भी मैटर सब जुडिस है तो हमें एग्जाम्पल्स के अंदर किसी सिविल सर्वेंट का या किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है। लेकिन हाँ, कोई चीज़ प्रूव हो चुकी है तो वहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कोई मैटर सब जुडिस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस एग्जाम्पल को यूज़ नहीं कर सकते। आप ABCD करके यूज़ कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल के अंदर, और बता सकते हैं कि अगर ABCD ने अगर कोई फेक सर्टिफिकेट को यूज़ किया उसके बाद वो सर्विस में आता है, तो वहाँ पर आप हाउ सर्विसेज के अंदर एथिक्स का इरोजन किस तरीके से हो रहा है, या फिर पूरे एग्जाम के अंदर कैसे एथिक्स का इरोजन हो रहा है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो करंट अफेयर से क्वेश्चंस को भी टू एन एक्सटेंट प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और एग्जाम्पल्स में तो आप इसको यूज कर ही सकते हैं। एंड सर, एथिक्स में कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, उसका क्या अप्रोच हो सकता है? जो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सर ने भी, पति सर ने भी कहा था कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप काइंडनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, आप मोरालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव एक तो आप जो फिलोसोफर होंगे या थिंकर होंगे उनको आप कवर कर सकते हैं। बट अब एथिक्स में होता यह है कि आप कितने भी थिंकर्स कवर कर लीजिए, देयर इज नो गारंटी कि जो चीज़ें आपने कवर करी हैं उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वहाँ पर जितना ज़्यादा आपका बाकी का सिलेबस स्ट्रॉन्ग है,
तो वहाँ पर आप कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए आप आंसर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन में से, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एन एक्ट ऑफ काइंडनेस इज बेटर देन 1000 हेड्स बॉइंग फॉर द प्रेयर। अब यहाँ पर या तो बताया जा सकता है कि ये इस व्यक्ति के द्वारा कोटेशन दी गई है, अगर आपको पता भी लग जाएगा तो भी आपके आंसर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगर आपने स्पेसिफिकली उस कोटेशन को पढ़ा है तो एक अलग, अदरवाइज आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते हैं कि वाई एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रेयर। तो आपको कॉमन सेंस को ध्यान में रखना है, आंसर को छोड़ना नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि जस्ट बिकॉज मैंने इस कोटेशन को कभी पढ़ा नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, वो नहीं करना है। आप अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हुए उसका आंसर दीजिए। जितनी भी चीजें आपने नोट्स में पढ़ी, सर के नोट्स में पढ़ी हैं, अदरवाइज अपने कवर करिए, उस इन्फॉर्मेशन को, उस नॉलेज को यूज करके आप एक अच्छा आंसर लिख सकते When you speak of quotes, I have a small advice for all of you. Now, usually UPSC focus brings in quotes from either values or virtues, because we all study virtue ethics, right? So we have a list of virtues. And the best way to practice quotes is make a list of the values, pick up a couple of quotes, and start doing an analysis of them. Start writing on it. That's the best way. We have some basic values, say kindness or forgiveness or love. But just write these values. Pick up few quotes. It can be Alexander Pope's quote. It can be Diogenes' quote. It can be anybody's quote. Just start writing on it. That's the best way to learn. That's the best way to practice quotations. One. And next part, when you look at the Times of India, when you look at a lot of these newspapers, in the editorial page, they give you quotes at the top, especially Times of India. On the left-hand corner top, you have a quote of the day, thoughts of the day. Read those quotes. Some of the quotes are very valid. Now, what is interesting is where does UPSC picks up quotes from? Only from these sources. So that's how you practice quotes. Don't do any special effort to identify quotes and start writing. Just make a list of values. Go ahead, start with it. It works. Trust me. Sir, one question more, that when sir was giving that key how to use current affairs as an example, in ethics, are there different kind of examples which can be used? Okay, first of all, examples are overrated. Content is the king. And examples are not your answers. Examples are only to complement your answers. When I'm asking a question, explain. I want your explanation. I don't want your examples. You know what I've seen, what students do is they write one sentence and there's an example. 5 sentences long example, 1 sentence of explanation. That is not explanation. So always remember, examples are complement to your answers. So don't over-focus on examples. And besides, if you notice something, if you look at previous year's papers, say 2023, only 4 or 5 questions in your paper had explicitly mentioned the word examples, illustrate with examples, or discuss with relevant examples. Rest other questions did not have. For example, suppose if I ask you a question on justify, I want your justification, I don't want your examples. So in such questions, examples become optional. So coming back to the question, where to pick up examples from? Examples from newspapers. As I said earlier also, when you talk about human values, I want personal examples. I want to see how you practice honesty. So personal examples matter. And I'm sure all of us have learnt honesty at home, honesty in school. So I want personal examples in those values. You can pick up examples. Suppose when you're talking about foundational values, say impartiality or objectivity, you can pick up examples from civil services. For example, for quotation, suppose if you're illustrating or analyzing somebody's quotation, why not pick up examples or examples of great leaders or Nobel Prize winners? It will make sense. Oh, Kailash Satyarthi makes wonderful example. You know that? So that's how you pick up examples. Keep it as diverse as possible. It will help you. Asif sir, have you come across the toppers copies? What kind of trend do you see in these To copies? completely agree with Pathi sir on this, that there's not even a sentence as an argument. It's usually 3 words or 2 words, and then there are 2-3 examples under it. So earlier, what was happening in the last few years, from 18-1900, people were using examples to substantiate the argument, like sir was saying. Now, increasingly, emphasis is more on examples and absurd examples and non-related examples, and many of the arguments are not self-explanatory. What are you trying to say? There's no statement, there's no argument. So this is something that we are noticing, and I believe that's something that will backfire. So I completely agree on that part. Ethics, unlike GS 1, 2, 3, is one place where definition is very important. Most of the time, people start with definitions in answers, and that is something that people should
concentrate on come up with good definitions. Second, third, I think even though it's not explicitly asked, there are instances where students are using diagrams to enrich their answers, which is probably bringing some diversity into the answer, but not explicitly asked. But if you want to decorate your answers, if you want to add some embellishment to your answers, I think diagrams are something that you can look forward to. But again, there's a catch here. You have to write 3,000 words. So where is the time? Time, right. So that's why, like, It's I've seen this optional. trend. Right. I've seen this trend with students. They focus so much on all these embellishments that towards the end they're left with no time. No time finish to complete the case paper. studies. Yes. Right. So you have that's to why find a people- balance. Yes. And what happens if you lose out on case study? You straight away losing 20 marks. And that's happening. That's happening. That's happening. Right. That's one of the reasons why people score very less. Why? Because they over-focus on areas which they're not supposed to focus. And the nature of examples have also become more current oriented. That is also something that we are noticing in people's answers. They want to connect with what is happening around them. And that is also something that's seen in many toppers copies. Right. And sir, coming to that, because when a student is attempting the paper, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना यूपीएससी में इट्स वेरी डेंजरस. अगर छोड़ना नहीं चाहिए. ऑब्वियसली अगर आप जो रैंक लिस्ट देखेंगे ना सर, इन 100 रैंक in 100 marks there are approximately 800 candidates. यानी एक जो आपका मार्क्स है that is 80 रैंक, और अगर आपने 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन छोड़ दिया आपने जिसमें आपको 10 मार्क्स मिल सकते थे, तो आप देख लीजिए कि आप 800 रैंक पीछे चले गए. So that's how much important that completing the paper is in this examination. Sir, governance part में what kind of approach one should take for this particular examination, and if there is any important area to prepare for this? जैसे आंसर राइटिंग की बात चल रही थी, तो आई वुड लाइक टू फोकस ऑन वन एरिया. आई हैव सीन कि जनरल प्रॉब्लम क्या हो गई है कई बार स्टूडेंट्स के साथ, कि कुछ बेसिक टेम्पलेट्स हैं, दे फॉलो इट ब्लाइंडली, कि कीवर्ड्स जैसे क्वेश्चन पढ़ा, जैसे गति शक्ति स्कीम, तो गति शक्ति स्कीम डेवलपमेंट, तो उस पर फोकस कर लिया, दे फॉरगेट द मेन क्वेश्चन. व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन गवर्नेंस में देखिए, गवर्नेंस में हमेशा क्वेश्चन है ना, तो कोई भी स्कीम है, कोई भी पॉलिसी है, तो व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज इट. तो जब भी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है, तो यू मस्ट फोकस ऑन द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और आप जैसे अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, देन सब्सटेंशिएट इट. स्टूडेंट्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जस्ट दे राइट द डेफिनेशन. तो आईबीसी में चलते हैं तो उनको लगता है कि जैसे पहले है तो हम गति शक्ति स्कीम बता दिए, सिविल सोसाइटी है जैसे, तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन्स रोल, तो सब जैसे एग्जांपल्स कोट करने लगेंगे, एंड दे फॉरगेट कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या था. क्वेश्चन में कहा था कि हाँ, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इट. So probably they are so focused on technicalities and structure, they miss the question completely. मिस द क्वेश्चन कंप्लीटली. तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जैसे उन्होंने लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था कि डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स आर दे डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच. तो अब डिस्क्रिमिनेटरी है, तो आपको यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा. किसी भी आपको यू आर पिकिंग एनी स्कीम, एनी पॉलिसी, तो अगर आप इसके फेवर में है, ओके, यू आर राइटिंग फॉर, तो फॉर में आप उसको एग्जांपल दो, थ्रू एग्जांपल यू सब्सटेंशिएट कि हाँ ये कैसे डिस्क्रिमिनेटरी है. अगर नहीं है तो हाउ इट इज नॉट, तो इस पे फोकस करना है. तो एटलीस्ट यानी कि इन 150 वर्ड्स इफ यू आर आंसरिंग, तो 50 वर्ड्स यू मस्ट डेडिकेट टू दिस पार्ट एटलीस्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब जैसे गवर्नेंस में प्रिपेयर करने के लिए, तो गवर्नेंस में यहाँ पे जैसे नेक्स्ट है इसमें आई एंड नितिन सर, तो नितिन सर हम क्लासेस लेते हैं, तो नोट्स हमारे यानी कि सफिशिएंट है, नोट्स गुड इनफ, क्योंकि अगेन जैसे एथिक्स में वैसे गवर्नेंस में भी आपके पास कोई ऐसे टेक्स्ट बुक नहीं है. बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ का जो मटेरियल है गवर्नेंस का, इट ऑल्सो कवर्स ऑल दी एरियाज, यानी कि जितने भी एरियाज आपको यूपीएससी ने डिफाइन किए हैं, तो एरियाज अच्छे से कवर करता है, मीनिंग कवर करता है, प्लस क्लास नोट्स हैं. एंड यहाँ पे हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं, तो यस करंट अफेयर्स में जितने भी स्कीम्स हो गए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो गए, प्लस हमारा जैसे फॉर एग्जांपल आरटीआई है, तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जैसे ही था तो आरटीआई न्यूज में था, तो आपको एक्सप्लिसिटली उस पर एकदम आपको सेपरेट एक वीडियो है कि हाउ आरटीआई एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट. तो आपको ये कनेक्ट करना है कि हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आप डेफिनेटली आप आरटीआई से कनेक्ट करेंगे. तो ऐसे सब यानी कि करंट अफेयर्स से आपको कनेक्ट करना है. तो अपने जितने भी लेक्चर्स रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो बहुत हेल्पफुल हैं इसमें करंट अफेयर्स के. Okay. I want to clarify one thing. We have a course called GS Advanced Course for Mains CSC 2024. इसमें we take the current issues जो different GS paper 1, 2, 3 and in fact 4 का सर ethics enhancer course ही ले रहे हैं GS paper 4 के लिए. तो इन सारे aspect को इसके through cover किया जाता है, and current related issues of governance that Manjul sir will be taking in that particular session as well, so that
एक जो एक्स्ट्रा पुश चाहिए आपको एग्ज़ाम में, एक एक्स्ट्रा +80 +100 मार्क्स चाहिए आपको इस मेंस एग्जामिनेशन में, वी कैन ऐड थ्रू दिस जीएस एडवांस कोर्स। ये हमारा टारगेट है। सर, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच वन शुड टेक फॉर एथिक्स फॉर नेक्स्ट 2 months? और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हो जो आप बताना चाहें। Important areas, see, I'll tell you how it works. Now, when you say important areas, usually UPSC has a habit of not repeating the themes the very next year. Like, for example, last year, if there's a question on emotional intelligence, this year they will not have a question on emotion. Like, if you see attitude, we didn't have questions in last 2 years on attitude. So I'm expecting something on attitude. So, for example, you should focus on attitude, you should focus on essence of ethics this year, especially relationship between politics and ethics. Can we have values-based politics? So all that will be there. So essence of ethics will be important for you, emotional intelligence will be, attitude will be. And if you ask me, ethics in IR will be important. Corporate governance will be important, not corporate social responsibility. Corporate governance will be important because corporate governance has been in news, so that will be important. And I am expecting something on, say, ethics infrastructure. How can we strengthen moral values in governance? Or how can we strengthen moral values in our policy practices and things like that? So that's one area which you should be focusing on. Yes. Sir, would you like to add anything? मैं यही कहूँगा कि करंट अफेयर्स को देखिएगा कि उसमें कौन कौन से थीम्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो इरोजन ऑफ एथिक्स इन द सिविल सर्विसेज, मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है गिवन द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द सोसाइटी एंड हाउ द फेक सर्टिफिकेट्स आर बीइंग यूज्ड। सेकंड, क्योंकि इलेक्शंस अभी गए हैं, तो इरोजन ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स, क्योंकि कैंपेनिंग के टाइम पर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये 2 एरियाज़ जो है मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा करंट अफेयर्स में देखिएगा कि अगले 2-3 महीनों में कौन कौन से ऐसे थीम्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं जहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। I would ask people to take a look at our question paper, especially our test series. We make amazing question papers. Sir sets the paper, and we cover a lot of important areas. For those of you who haven't started writing papers, I think there's an inertia to start, right? Start somewhere, because if you don't start and if you don't practice, you will not experience the challenges that you will experience in the examination. And unless you go through that experience multiple times, you will not be able to improve upon it. Paper completion is an issue. Transitioning from case study to part A is an issue. Dealing with code-based question is an issue. So unlike GS 1, 2, 3, I think paper 4 is one relatively more scoreable because many people cross the threshold of 110, 120 marks in paper 4. And unlike GS 1, 2, 3, paper 4 has more completion issues and more difficulty. So you must write answers in paper 4. Okay, speaking of test series, I will be taking 3 full-length tests. The papers are designed by me and I'll be doing the discussions myself. In fact, the discussions are more of a learning activity, trust me. And a lot of your revision also happens in those discussions. And the discussion, not only I'll explain the answers, I'll talk about the connected themes also. So do watch that. You should watch out for that. Sir, Manju sir, would you like to add any topic for governance? गवर्नेंस में जैसे क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स हैं, तो अभी आपको 3 लॉज यानी कि आपको रिप्लेस्ड हुए, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट होता है। हेल्थ केयर रेगुलेशंस रिलेटेड काफ़ी आजकल नहीं होता है कि न्यूज़ में भी रहा है, आपने देखा होगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपको इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इन सब पे प्लस आरटीआई इंपॉर्टेंट हो गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से। तो ये जितने भी आपको न्यूज़ में रहे हैं जो मेजर यानी कि नहीं होता, रिकरिंग रहे हैं स्पेशली, तो आपको डेफिनेटली उन पे फोकस करना चाहिए। दीज टॉपिक्स, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स, इम्पैक्ट, स्पेशली इज इट सफिशिएंट इनफ और नॉट, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स के बारे में काफ़ी बात होने लगी है, पुलिस रिफॉर्म्स की भी बात करते रहे हैं, तो इसलिए डेफिनेटली वन मस्ट गो थ्रू इट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द सेशन एंड आई होप सिंसियरली ये हमारा जो एफर्ट है, ये इनिशिएटिव है, आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करे। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस विच यूड लाइक टू इनकॉर्पोरेट इन आवर सेशंस, तो आप ज़रूर आपके जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिख के हमें बताइए। यू कैन रीच आउट टू अस एज वेल इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। थैंक यू एंड जय हिंद।